Hey, hello, good morning everyone. This is our EVS class. So, without wasting time today, we'll do a quick recapitulation of our yesterday's work. So, yesterday you have seen some national festival on the screen. First national festival is Republic Day, and we celebrate Republic Day on January 26th. Next national festival is Independence Day. Independence Day we celebrate on 15 August. 15 August. Next is our very dear Bapuji, Gandhi Jayanti. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. 2 October. You can say 2nd October or you can say 2 October also. So three main national festivals are Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti. Republic Day we celebrate on 26th January. Independence Day we celebrate on 15th of August and Gandhi Jayanti we celebrate on 2nd of what? October. Next, read and answer the questions. When do we celebrate Independence Day? Come on, think. Yes, 15th August. When do we celebrate Republic Day? 26th January. 26th January. And when do we celebrate Gandhi Jayanti? 2nd October, or you can say 2 October. 2 October. Some important festival names with dates. When do we celebrate Children's Day? Children's Day we celebrate on 14th of November. 14th of November. 14th of November को हम Children's Day celebrate करते हैं. In the memory of किसको याद करते हैं? जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम प्यार से चाचा जी भी बुलाते थे. Next is, when do we celebrate Teachers Day? Teachers Day 5th September. 5th September. और इस दिन हम किसको याद करते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. किसको याद करते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. Got it? Now our questionnaire. What is our national anthem? Jana Gana Mana. What is our national song? Vande Mataram. The national animal of India is tiger. National bird of India is peacock. National tree of India is banyan tree. The national flower of India is lotus. National fruit of India is mango. National river of India is Ganga. Our national flag is Tiranga. The national sport of India is hockey. The four seasons are summer season, winter season, autumn season and spring season. Name two medicinal tree. Now two medicinal tree is neem, people. Neem tree, people tree. Now national festival written here and that side dates. So Independence Day will match it with 15 August. Republic Day 26 January. Gandhi Jayanti 2 October. Teachers Day 5th September. And Children's Day 14 November. So today we have done a quick recapitulation of our yesterday's work. So now today we'll start with introduction of national symbols. National symbols. Now what are national symbols? National symbols किसे कहते हैं? Yesterday means कल हमने national festival त्योहारों के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे national symbols के बारे में. Symbols बोलते हैं चिन्ह को, साइन को, निशान को. National symbols are patriotic symbols. देशभक्ति. What is the meaning of patriotic? Patriotism means देशभक्ति. National symbols are patriotic symbols representing nation and countries. जो हमारी countries को, अलग अलग different countries को और nation को बताते हैं. जैसे लोटस है. अब लोटस कहाँ? लोटस, what is first of all what is lotus? Lotus is a national flower.
फ्लावर है और कहाँ का है? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो कौन सी कंट्री का है? इंडिया का है। नेक्स्ट इज नेशनल सिंबल और पिक्चर इज ऑफ टाइगर. So tiger is what? National animal, and it is a national animal of India. Next picture is of peacock. Peacock. What is peacock? Peacock is national bird of India. Next is flag. Now flag, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? इंडिया का. और इंडिया के फ्लैग को हम क्या बुलाते हैं? ट्राइकलर और तिरंगा. Next is mango. Mango is what? Our national fruit. And which country? India. Next is hockey. Hockey is also national sport of India. So these are some national symbols of our country. Our country is India. Next slide you will see national symbols like tiger is there, mango fruit is there, national flag Tiranga. Our national emblem, हमारा national emblem क्या है? सत्यमेव जयते. What is our national emblem? सत्यमेव जयते. National bird is peacock given, national flower lotus given, and students are playing national game that is hockey. I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये सब. Pictures are very clear. So these are our national symbols. Some national symbols that I have put here also. पीकॉक, लोटस, टाइगर, मैंगो, तिरंगा. अब आपको क्या दिख रहा है? हिंदी में ये क्या लिखा हुआ है? आर और इसमें स्लीपिंग लाइन लगी हुई है 2. इसको क्या बोलते हैं? ये किसका सिंबल होता है? किसका साइन होता है? दिस इज अ सिंबल ऑफ रूपी. रूपी मीन्स पैसा, करेंसी ऑफ इंडिया. हमारी इंडिया की क्या करेंसी है? अगर आपको कुछ मार्केट से खरीदने जाना है तो आप उनको क्या देते हैं? रुपीज़. तो रुपीज़ का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है. समझ में आया? सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आज के लिए यही सब है आपके लिए. आपको मैम ने इंपॉर्टेंट सिंबल्स बता दिए हैं एंड नेशनल फेस्टिवल्स. और क्वेश्चनरी तो बहुत ईजी है. सो दिस टाइम EVS इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल. लर्न द डेट्स. विल गेट बैक टू यू टुमारो अगेन विथ सम नेशनल सिंबल्स एक्सरसाइज. डू वेल. टेक केयर. बाय बाय.